और यहाँ पे मैं एक चाय की दुकान पे आया हूँ चाय पीने के लिए। ये रही वो शॉप। और ये लोग इजिप्ट से हैं। Amazing! Dinner. Yes, before here the map for the marathon. Okay. Yes, but now About the cars or the no people. about the people. तो ये है नेचुरल बिदुन मेकअप। पहले के ज़माने में मेकअप नहीं होता था तो ये यूज़ किया जाता था। इट्स फुली नेचुरल। Guys, guess how does this rock look like? In what shape do you think it is? Answer is, it looks like a face, right? First side, the face looks pretty ugly, but on the other side, it's completely fantastic. A perfect face, right? It can also be called as an optical illusion, I guess. Look, that giant rock between it. I mean, if I move one rock from this, that giant rock is gonna come and smash me like paratha. I think that giant rock is pretty hungry. Yes, before here the map for the marathon. Okay. Yes, but now About the cars or the no people. about the Marathon people. for the people. Yes. Okay. A lot activity in here. For race for the camel and also hiking. So this map means that. This map for the marathon the people. Okay. But because the sun look what happened, yeah. It removed everything. Yes. The people now right for the memory. Yes. They'll enjoy, bro. Okay, thank you. Nice to meet you. Same. Okay, we understood it. Professor understood. Pro professor. All right. Let's move on to the next destination because we have to avoid this corona. You see these people? Yes. Don't go in that mess to avoid corona. This corona. So let's just get out of it. Let's go. Where's my driver? Hey, there he is. Yummy. Amazing! Dinner. You're hungry? Yeah, hunger. Fuck, that's sick. بدك جلاجة؟ Perfectly cooked. يسلم ايديك يا حاتم. شو حاجة؟
Perfect. Oh, that is good. Ah, there's so many spikes. Hello friends, welcome back. This is the day 2 in Jordan, and today as I told you that we arrived yesterday and visited Wadi Rum, and today our destination is Petra. It's 101 kilometers away. But it's too, it's kind of near, approximately like 1 hour or maybe 15 minutes. So goodbye Wadi Rum, I'll miss you. Plus this is so beautiful, and as you guys saw that I literally went that high, all the way up. I'm literally sweating right now as well, but this is the last moment in Wadi Rum with me. Actually I wanted to take some drone shots, but I rented, it was rent. In that tent you can like use drones as well for some shots, but according to some app problem I can't. It was a really good experience, guys, like awesome experience, really awesome experience. Plus when sleeping in your tent, it was like, it's so nice. It felt like I'm in a scout training, so it's really good. I think we'll exit now. So guys, let's go to Petra. Make sure to subscribe, like, comment, share, okay? इंडिया की स्ट्रीट जैसा लग रहा है। तो गाइस अभी जैसे पेट्रा के लिए निकल रहे थे वादी रम से, गाड़ी छोड़ दी हमें और हमारी गाड़ी पे हम सवार कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल वही गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, और यहाँ पे मैं एक चाय की दुकान पे आया हूँ चाय पीने के लिए। ये रही वो शॉप, और ये लोग इजिप्ट से हैं। What's your name? Ayman. Huh? Ayman. Ayman. Yes. India? Yes. Delhi, Punjab, Gujarat. Gujarat. Yes. Muslim? Yes. Yes. Thank you. My name is I am Muhammad. What? Muhammad Muhammad. from Egypt. From Egypt. So what all you give here? You? What you give? What you only tea? Sino انت بيها ويسال انت بيها انه بس كوفي ولا sino في اغراض ثانيه؟ لا في أغراض تانية.
هذا ये लोग बहुत काइंड और अच्छे थे और दोस्त भी बन गए साथ में। तो चलिए पेट्रा पे अभी चलते हैं 104 किलोमीटर्स। तो गाइस अभी पेट्रा को शायद 44 किलोमीटर्स बाकी है और खाली यहाँ पे बीच में हम ये इसी चीज़ का वेट कर रहे थे। द बेस्ट, जस्ट लुक एट द व्यू, ऑसम। We are literally like at the top of a hill. So we just stopped. We saw this souvenir shop. So let's have a look inside. अंदर देख ही लेते हैं अब ऐसा क्या होगा अंदर। तो चलिए चलते हैं अंदर। गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था ये जुल्फिनाइट होता है और ये ओपाल। आई होप यू रिमेम्बर। और यहाँ पे कुछ ये तो पेट्रा का है, इतना तो मैं ले ही सकता हूँ यार, ये तो ब्यूटीफुल है। उसके पीछे ये माउंटेन्स का है, जॉर्डन वादी रम। ओह दैट इज 2 in 1। यहाँ पे अलग अलग तरह की चाकू हैं। गाइस सब्सक्राइब होना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। और यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी लिख रहे हैं। उफ क्या मत गाइस, अगर आप कोई भी सुवेनियर शॉप में जाओ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक कैमल दिखे नहीं, हर जगह कैमल। ओह वेट, ये तो ट्रेजरी भी नहीं है, ये तो कुछ और दिख रहा है। यहाँ पे हाथी है। अरे ये तो छोटा कैमल अच्छा है, क्यूट। और यहाँ पे अलादीन का चिराग। ओह ज़ाइलोफोन, ये पुराने ज़माने का JBL स्पीकर होता है।